a jawan's head was chopped off. And So Hemraj and Hemraj ka हाँ. 12-13. हाँ. At that time there was so much of outrage कि अगर वो हमारी मुंडी काट के ले गए तो हम उनके 12 मुंडी 10 मुंडी पता नहीं क्या था काट के ले आएंगे. This is the kind of demand that the civilian population in our country, whether it is politician, whether it is common, that this shame cannot be tolerated. देखिए ऐसा है, ये बड़ा विचित्र सा केस था जो कि मीडिया में आ गया. वो उस लेवल पे पड़ोसी के साथ जैसे लड़ाई होती है ना, तो रेट्रिब्यूशन हो जाता है. अब उसको एक बड़ा नाम दे दिया जाए, किसी मैसेज लेवल पे हुआ है या छोटे से लोकलाइज्ड लेवल पे होता है, जनरली रेट्रिब्यूशन इज गिवन. द डिग्री ऑफ रेट्रिब्यूशन में वेरी, बट इट इज नॉट टेकन डाउन लाइंग डाउन. बट जैसे आप रेट्रिब्यूशन की बात कर रहे हैं, उरी हुआ, उरी के बाद जिस स्केल पे हुआ रेट्रिब्यूशन, उरी का स्केल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा स्केल था. उरी का जो रेट्रिब्यूशन था वो बहुत बड़े स्केल पे था, और वो बड़ा बोल्ड स्टेप था इस गवर्नमेंट का, बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था. क्योंकि रेट्रिब्यूशन होते थे, पहले भी होते थे, छोटे लेवल पे हो जाते थे. ठीक है, इट इज लाइक तो तूने मेरे को पत्थर मारा तो मैंने भी तेरे को पत्थर मारा. ठीक है, पर पत्थर मार दिया जाता था ऑल अक्रॉस सर, और जस्ट जम्मू कश्मीर, मतलब पंजाब में भी होता है? नहीं, पंजाब में तो इंटरनेशनल बाउंड्री है. आईबी पे नहीं होता? आईबी पे नहीं होता. आईबी इज मैन्ड बाय द बीएसएफ. आईबी इज नॉट अ आर्मी थिंग. इट्स ओनली एट द एलओसी लेवल दैट इट इज एट द एलओसी लेवल व्हेन द एलओसी इज हॉट. तो रेट्रिब्यूशन तो होता है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं. आप मारोगे, हम वो गांधी वाली थ्योरी अब चली गई कि एक थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा गाल आगे करूंगा, नहीं. और इसके लिए आप पॉलिटिकल ओके नहीं मांगते? दिस इज डन एट द फौज लेवल इटसेल्फ. फायरिंग इज समथिंग लाइक एन एनकाउंटर. उधर से गोली चली तो मैं भी तो चलाऊंगा ना, बैठ के थोड़ी देखूंगा. बट दिस Uri was a landmark. It was a landmark. Uri was a landmark. Pulwama was a landmark. It was a very, I must say, by Pulwama you mean Balakot. Balakot. But what I'm saying is that I grant this government, at least they took this kind of an step. नहीं, आपने You need a very bold leadership for it. You actually need a very bold leadership. पुलवामा में जो हुआ था, there's a lot of talk that अगर TSD होता, that at Pulwama might not have occurred. See, I really don't know if लोग बोलते हैं, but yes, let me first, you know what happens. I'll give you a background. Pulwama is not the first time that this kind of a IED took place where a whole bus got burnt. Sometimes in May 2004, एक BSF की बस भी ऐसी उड़ी थी, काजीगुंड और बनिहाल पास के बीच में एक वजूर करके जगह है उसके पास. एंड उसमें तो BSF के जवान ही नहीं, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे भी मरे थे. But area was around मतलब it's similar like South Kashmir. South Kashmir was always hot. South Kashmir was always hot. In fact, if you look into the history, the maximum terrorists, either if they're killed on the line of control in North Kashmir, but in the hinterland, mostly it is South Kashmir. It's a den. It's a den. And जब वो हुआ था, again I say, I was very lucky to have, you know, worked under certain very bold generals, very upright generals. So, in fact, I was just seeing General Dillon's video. So, it's a similar situation. He had just taken over and 2-4 दिन के अंदर ये हो गया. Exactly something like this happened. And probably it would have been a pattern or something. General VK had just taken over as GOC Victor Force, South Kashmir. और वो 1 हफ्ते के अंदर ये बस उड़ गई. उसके 1 महीने बाद मैं पोस्टिंग चले गया. And he gave me a task that we need to, I was then just a major, but your reputation reaches before you, precedes you. So he said, I don't know, somehow, but you need to start. So took some time again. You have to start building assets. It takes time. By then, December, another vehicle, in fact, one of the company commanders, he had come to the sector headquarters in Anantnag. And while he was going back, he was moving in a single vehicle. It was a civil vehicle. And 11 people died.
ये आईडी कोई नई चीज़ नहीं है. अगर आप पहले देखें तो बहुत आइडियाँ चली हैं, कार बॉम्ब्स बहुत हुए हैं. बट दिस वॉज अ रूरल एरिया वेयर दिस आईडी टुक प्लेस, एंड देन वी लिटरली बाय देन had established our networks. There were 7 of them. You know, आर्मी में जनरली 24 महीने तक की पोस्टिंग होती है फील्ड में, 2 years मैक्सिमम. If it is not a very hot field, then maybe 2.5 years. But in a hot field, about 24 months. By about the 20th month, your posting is in. I continued for 42 months. One single tenure. मेरी बीवी तो फौज की थी बेटी, उसका भाई भी फौज में था. And literally she started telling me कि यार, if you're not interested in this marriage, tell me. I'll send you a divorce notice. But then there was a task ahead. I don't know, fortunately for one character, one terrorist, or fortunately for me or my family, I got promoted to full colonel. मतलब I went there as a major. I did my complete lieutenant colonel, मतलब half of my, about one year as a major, and then I was there for my full lieutenant colonel tenure. I got promoted to full colonel there. And then, because of the promotion, vacancy had to be, it's a circle, people have to be moved. So I was moved out. So one chap was left. It literally finished off the complete... You were saying 7 you zeroed on to 7 terrorists. 7 main people who are ID experts. Okay. In South Kashmir. In South Kashmir, 6 we eliminated. And how did you eliminate them? Same coin. Meaning? They were using IDs. So wherever they were hiding, they were just asked once, come out. If don't, ID.